Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in this lecture, we're going to do the part two of the chapter Therapeutic Approaches. I know, guys, it's super long. अभी तो आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मेरे को ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है. सो मैं आप लोग ये थोड़ा सा ना डिटेल में बनाऊँ बिकॉज दिस इज ऑल्सो फॉर 20 सॉरी आई जस्ट 2024 25 batch. सो हम थेराप्यूटिक अप्रोचेस इसको ना पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. मतलब पार्ट वन तो आ गया, पार्ट टू आज होगा. मतलब आई थिंक 4-5 पार्ट्स तो बन ही जाएंगे गाइस. सो दिस इज पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर एंड like we have done the nature and process of psychotherapy, characteristics of psychotherapeutic approaches, goals, alliance, and now we do the chief method. What is the chief method of treatment? Psychodynamic therapy. So ये फ्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स टू मतलब लाइक कौन सा हम चीफ मेथड कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं फॉर साइकोडायनामिक. हम लोग फ्री एसोसिएशन में यूज करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सॉरी, फ्री एसोसिएशन and reporting on dreams to elicit the thoughts and feelings of the client. So एक material है, it is introduced to the client to help him to confront and resolve the conflicts and thus overcome problems. Psychoanalysis through free association and report of dreams to elicit the thoughts कि क्या thoughts है, क्या feelings है, what the client is thinking. So the material hai, it is interpreted to the client, which will help or him to overcome the conflict and resolve the conflicts and overcome problems. For behavior therapy, faulty conditioning कि behavior में कहाँ गड़बड़ है, कहाँ problem आ रही है तो client को, right? Right. So the behavior therapy है. Like this, the cognitive methods employed in this type of therapy challenge the faulty thinking कि behavior में कहाँ problem आ रहा है, where client is facing the problem, is facing to overcome psychological distress. It provides existential therapeutic environment which is positive, accepting, and non-judgmental. The client is able to talk about the problems and the therapist acts as a facilitator. तो क्लाइंट क्या कर रहा है यहाँ एग्जीक्यूटिव थेरेपी क्या बोलती है, एक ऐसा थेरेपी जो थेरेपिस्ट है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है where client feels that he or she can share the problems, and the therapist should be non-judgmental and should be accepting what client you know is narrating about his or her problems. तो अगर वो एक्सेप्ट करना है, उनको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है he went through this, ठीक है एक्सेप्ट कर लिए. They should not judge, non-judgmental. The client arrives at the solutions to process of personal growth. तो एक सॉल्यूशन क्लाइंट तक पहुंचेगा, एक प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ कि कौन सा पर्सनल ग्रोथ कि ठीक है ये हुआ था, अभी इसको ये फीलिंग लग रहा है, पहले वैसे फील कर रहा था अभी वैसे फील कर रहा है. What is the nature of therapeutic relationship between a client and a therapist? For psychodynamic therapy, assume that the therapist understands the client's inter-psychic conflicts कि अंदर से क्या फील कर रहा है, what is the conflict, what is on the client. So थेरेपिस्ट को ये होना चाहिए कि he or she should understand कि क्लाइंट के जो इंटर है अंदर से क्या फील कर रहा है, उससे क्लाइंट से ज्यादा उसको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. Hence, the therapist who interprets the thoughts and feelings of the client to her him so that he gains an understanding of the same. So the that the क्या बोलते हैं क्लाइंट गेन कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, therapist should interpret the thoughts and feelings of the client
बिहेवियर में कि उसको पता होना चाहिए कि कौन से वो फॉल्टी बिहेवियर कौन सा है एंड क्या पैटर्न्स है, व्हाट इज द थॉट पैटर्न। इट द थेरेपिस्ट इज केपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट द करेक्ट, कि थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि ये वाला बिहेवियर उसके लिए सही नहीं है, इसको ये ऐसे सही करना है। जो फॉल्टी बिहेवियर्स हैं, फॉल्टी बिहेवियर फॉल्टी बिहेवियर को ठीक करना है। एक्सिस्टेंशियल थेरेपी, it emphasizes that the therapist merely provides a warm, empathetic relationship in which the client feels secure to explore the nature and causes of her his problems by herself or himself. The emphasize करता है कि थर्ड पहले थेरेपिस्ट प्रोवाइड करेगा वार्म एम्पैथेटिक रिलेशनशिप जहाँ क्लाइंट भी फील करे सेफ सिक्योर, हाँ कि he or she can share his or her or his problems to him or her to the therapist actually, एंड वो खुद जाने कि उसकी गलती कहाँ हो रही है by himself or herself. So both the psychodynamic and the behavior therapy assumes that the therapist is capable of arriving at the solutions client's problem in contrast to existential therapy. What is the chief benefit? Emotional insight as an important benefit that the client derives from the treatment. Emotional insight is present where the client understands his or her conflicts intellectually, is able to accept the same emotionally, and is able to change his or her emotions towards the conflicts. The client symptoms and distress reduce as a consequence of this emotional insight. So उसको मतलब should change his or her emotions towards the conflicts. Behavior therapy considers changing faulty behavior, गड़बड़ी वाला जो behavior है उसको change करें thought patterns to adaptive ones as a chief benefit, मतलब जो ठीक है उसके लिए behavior उसको पहले पता होना चाहिए कि what is the thought pattern जो है उसको ठीक करना है, faulty behavior को ठीक करना है, instituting adaptive or a healthy behavior and thought patterns ensures a reduction of distress. So ensure ये भी करेगा कि distress मतलब stress नहीं ज़्यादा हो and symptoms. Existential therapy में it values personal growth and the chief benefits as the chief benefit. Personal growth जो है वो chief benefit है. Personal growth is one of the process of gaining, increasing understanding of oneself and one's emotions and motives. कि जो personal growth अगर पता चल जाए वैल्यू करें as a chief benefit, तो personal growth वो तो फिर वो उसको chief benefit है किसको, client है ना. So personal growth क्या है, one of it's a process of gaining increasing understanding of oneself and one's aspirations and emotions and motives. Duration क्या है, it may continue for several hours. Several recent versions of psychodynamic are complete in 10 to 15 sessions. So several years लगते हैं, but अभी recently psychodynamics 10 to 15 sessions. Behavior therapy, behavior and cognitive behavior therapy are shorter and are completed in a few months. ये few months में complete हो जाता है. Existential are shorter and are completed in a few months too. They also complete in a few months and they're shorter. Of psychodynamic therapy पढ़ेंगे, which is pioneered by Sigmund Freud. So Carl Jung modified version of psychology is the analytical psychology. Carl Jung का जो modified version है, it is known as analytical psychology. Broadly, the psychodynamic therapy has conceptualized the structure of psyche dynamics between different components of the psyche and the source of psychological distress. So psychodynamic थेरेपी कॉन्सेप्टलाइज क्या किया है हमने, स्ट्रक्चर साइकी का स्ट्रक्चर क्या है, डायनामिक्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स की कंपोनेंट्स ऑफ साइकी कौन से हैं एट द सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. Method of eliciting the nature and of intrapsychic conflict. Since the psychodynamic approach views intrapsychic conflicts to be the cause of the psychological disorder, the first step in the treatment is to elicit the intrapsychic conflict. So psychoanalytic approach कैसे view करता है as an interpsychic conflicts which is to be the cause of psychological disorder. So first step क्या है treatment का कि to elicit पता चलना चाहिए कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है. Psychoanalysis has inverted two important methods for eliciting
the intersection steps, the free association method, and the dream interpretation. फ्री एसोसिएशन जो हमने पढ़ा था इन साइकोडायनामिक थेरेपी में, मेन मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट प्रॉब्लम, कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, where client is facing the problem. Once a therapeutic relationship is established and the client feels comfortable, the therapist makes him or her or him lie down on the couch, close their eyes and ask him to speak whatever comes to him without censoring in any way. तो क्या बोल रहा है, थेरेप्यूटिक एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है. Um, I'll just take one more slide. Yes. Um, hmm. Sorry, guys. Just give 2 minutes. Yes. So in sorry. Yes. So pre-association method. ये क्या होता है इसमें, अगर once a therapeutic relationship is formed, तो क्या हो रहा है, क्या क्लाइंट क्या करता है, शी फील कंफर्टेबल, तो थेरेपिस्ट क्या करता है, उसको लिटा देता है, आंखें बंद करवा देता है और बोलता है कि जो आपके मन में है वो बोल लो, कुछ भी है बोलो उसको, वॉट एवर कम्स टू माइंड बोल दो, आराम से बोल दो. But the client is encouraged to freely associate one thought with another, and this method is called free method of free association. तो client freely मतलब बोल रहा है, is encouraged to freely associate one thought with another. कोई भी thought हो रहा है उसके साथ with another, बोल दिए कुछ भी बोल दिए है ना, उसको हम बोलते हैं free association. The censoring super ego and the watchful ego are kept in abeyance as the client speaks whatever comes to mind in that is lax and trusting. तो सेंसरिंग ईगो सुपर ईगो जो है, जो ईगो है हमें, तो वो अबेन्स उसको दूर मतलब रखा रहता है कैप्टन अबेन्स, बिकॉज क्लाइंट को बोला गया है ना कि कुछ भी बोल सकते हो. As a therapist does not interrupt the free flow of ideas, desires, and conflicts of unconscious which had been suppressed by the ego emerge into the conscious mind. This free, uncensored verbal narrative of the client is a window into a client's unconscious to which the therapist gains access. अब क्या हो रहा है, तो थेरेपिस्ट नहीं करेगा इंटरप्ट, कुछ तो सारे सारे आइडियाज हैं, डिजायर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है ऑफ द अनकॉन्शियस, तो वो सब ईगो से सप्रेस था, अंदर सप्रेस किया हुआ था एंड उसको इमर्ज किया इनटू कॉन्शियस माइंड में. तो द फ्री अनसेंसर्ड वर्बल नरेटिव ऑफ द क्लाइंट इज एक विंडो है इनटू द क्लाइंट अनकॉन्शियस जो थेरेपिस्ट गेन करता है, थेरेपिस्ट गेन्स जो एक्सेस है थेरेपिस्ट के पास. This was free association. Dream interpretation. So write down his or her dreams upon waking up. Psychoanalysts look upon the dreams as a symbol of the unfulfilled desires present in the unconscious. The images of the dreams are symbols which signify interpsychic forces. Dreams are used symbols because they are indirect expressions and hence would not alert the ego. If the unfulfilled are expressed directly, the ever vigilant ego would suppress them and would lead to anxiety. These symbols are interpreted according to an accepted convention of translation as the indicators of unfulfilled desires and conflicts. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट बोल रहे हैं कि आप अपना ड्रीम लिखो, जब आप उठते हो तो ड्रीम लिखो, एंड साइकोलॉजिस्ट लुक अपॉन ड्रीम एज अ अनफुलफिल्ड, कोई फुलफिल नहीं किया डिजायर which is present in the unconscious, consciously unconsciously. Images, जो symbols होते हैं images हैं are signify the intrapsychic forces, and dreams में जो symbols यूज होंगे तो indirectly expressions बता रहे हैं कि ये सारी अलर्ट नहीं है, अलर्ट ईगो में, अलर्ट ईगो से
they're not alert, hence for not alert the ego alert नहीं होगा. अब ये unfulfilled desires express directly, अगर directly इसको express कर दिया, एक ever welling ego बन जाएगा, which will then convert, that will lead to anxiety. So these symbols are interpreted according to an accepted convention of the translation as the indicators of unfulfilled desire and conflicts. So modality of treatment. Transference and interpretation are the means of treating the patients. तो कौन सी मीन्स है ट्रांसफेरेंस एंड इंटरप्रिटेशन हम ट्रांसफरेंस पढ़ेंगे एंड रेजिस्टेंस देन डू अबाउट इंटरप्रिटेशन तो आज हम लोग इतना ही करते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू गाइस एंड नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफरेंस रेजिस्टेंस एंड interpretation के बारे में पढ़ेंगे. Thank you guys. I hope you guys liked it. And please subscribe to my channel and I'll see you soon.